नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजा बंदोपाध्याय। मेरे इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं जैसे कि मैं पहले वीडियो में बोल चुका हूँ, मैं इस पे यूपीएससी कमांड मेडिकल सर्विस के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, अगर आप उस पर मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या मुझसे कुछ क्वेरी आपका है उस एग्ज़ाम के बारे में, कुछ भी क्वेरी आपको अगर है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, जो कि डॉक्टर राजा बंदोपाध्याय का नाम से है, उस पर आप जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उससे पहले मैं आपको पिछले बार वीडियो में मैं बताया था एक्चुअली कि इस बार का जो एग्ज़ाम है आपको शायद पता होगा, लेकिन मैं फिर भी मैं बताना चाहूँगा। इस बार जो यूपीएससी का जो कमांड मेडिकल सर्विस का एग्ज़ाम है वो एक्चुअली 14 जुलाई को है, जो कि संडे पड़ रहा है। और उसका नोटिफिकेशन 10 अप्रैल को आएगा। और लास्ट डेट है ये एप्लीकेशन रिसिप्ट का, वो है 30 अप्रैल का। तो ये मैं पिछले बार वीडियो में मैं बोला नहीं था। अब मैं डायरेक्टली आपको, जैसे कि मैं उस समय मैं बोला था कि पेपर 1 में क्या क्या कौन कौन सब्जेक्ट हैं और पेपर 2 में कौन कौन सब्जेक्ट हैं, इसके बारे में मैंने विस्तार से नहीं बोला था। आज मैं आपको विस्तार से मैं क्वेश्चन भी बोलूँगा, कौन कौन सब्जेक्ट है वो भी बोलूँगा, और क्वेश्चन और का डिस्कशन भी मैं करूँगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पेपर 1 में कुल टोटल पेपर 1 में 120 क्वेश्चन है, जैसे 96 फ्रॉम मेडिसिन क्वेश्चन और 24 फ्रॉम पेडियाट्रिक्स। तो ये जनरल सिलेबस है और टोटल 120 क्वेश्चंस हैं। और आपके टोटल फुल मार्क्स पेपर 1 के 250 हैं, और पेपर 2 का फुल मार्क्स जो पेपर 2 है उनका भी फुल मार्क्स जो है वो भी 250 ही है, जिसमें 40 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच पार्ट। जैसे आप सर्जरी है, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स है, प्रिवेंटिव, जैसे मैं पहले भी बोला हूँ, पीएसएम है। और पेपर 1 में जैसे कि आपका रेस्पेक्टिव सुपर स्पेशलिटी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे मेडिसिन के कार्डियोलॉजी हो गया, हेमेटोलॉजी हुआ, गैस्ट्रेंटरोलॉजी है, फिर जेनेटो-यूरिनरी है, एंडोक्राइनोलॉजी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शंस और न्यूट्रिशन एट्सेट्रा। और क्रिटिकल केयर है, ट्रॉपिकल बाइट, टॉक्सिकोलॉजी से कुछ क्वेश्चंस हैं। उसके बाद फिर साइकेट्री हो गया, उसके बाद फिर मेडिकल प्रोसीजर्स, इमरजेंसी मेडिसिन एट्सेट्रा। जनरल सर्जरी में जैसे कि पूरा जनरल सर्जरी तो है ही, स्टार्टिंग फ्रॉम वुंड इन्फेक्शंस, ट्यूमर्स, उसका फिर ईएनटी में हेड एंड नेक है, और उसके बाद देन यूरोलॉजी से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑप्थेल्मोलॉजी से क्वेश्चंस आएंगे, ट्रोमेटोलॉजी, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर्स, फिर उसके बाद फिर मेडिकोलॉजिकल क्वेश्चंस कुछ रहेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं, लेकिन एज पर सिलेबस मैं बोल रहा हूँ। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे आपके इस अपने चैनल में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, जो कि लास्ट फ्रॉम 2005 टू टिल 2023 जो क्वेश्चंस आए हैं, इसमें से मैं 2-4 क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूँ, आपके साथ मैं शेयर करूँगा, मैं एक्सप्लेनेशन के साथ। इसमें मैं हेल्प लूँगा एक्चुअली प्रोफेसर डॉक्टर राजीव कुमार जो हैं, जो कि खुद भी यूपीएससी के टॉपर हैं, और मैं उनका बुक भी फॉलो करता हूँ। उसमें भी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा दिया हुआ है, लेकिन मैं विस्तार से और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं करूँगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो मैं पूछने जा रहा हूँ। तो जैसे कि सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, केसन डिजीज इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ऑप्शन ए सेलेनियम, ऑप्शन बी क्रोमियम, option C copper, and option D is manganese. So first you have to know that what is Caisson disease. So Caisson disease actually ये क्या है? ये Caisson disease, it is a deficiency of selenium. Okay, तो deficiency of selenium होने अगर if when there is a deficiency of selenium in our body, तो it results in the Caisson disease. So and it is also one of the cardiomyopathy which is endemic in China. चाइना में ये endemic है, और ये वहाँ पे it is as per epidemiologist वहाँ पे that is endemic. So Caisson disease is due to the deficiency of selenium. तो इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन ए।
जैसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीफंगल एजेंट इज यूज्ड इंट्रावेनसली. इस पे ऑप्शंस है फ्लूकोनाजोल, एम्पोटेरिसिन, मिकोनाजोल एंड केटोकोनाजोल. इस पे राइट आंसर जो है वो एम्पोटेरिसिन होगा. ओके, सो बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट टॉपिकल एजेंट्स क्या हैं. जैसे इमिडाजोल एंड ट्राइजोल ग्रुप में इमिडाजोल और क्यूटेनियस एप्लीकेशन में जैसे क्लोट्रीमाजोल, इकोनाजोल, केटोकोनाजोल्स, ऑक्सीकोनाजोल, मिकोनाजोल. वेजाइनल फॉर्मुलेशन में जैसे इमिडाजोल, मिकोनाजोल, क्लोट्रीमाजोल, टिकोनाजोल एंड ब्यूटाकोनाजोल है. और सिस्टमिक एंटीफंगल्स में अगर हम आते हैं तो वी कम टू ग्रीसिफ्लोविन, टेरबिनाफाइन, इमिडाजोल एंड ट्राइजोल्स एंड फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल एंड investigational azoles like posaconazole or and revaconazole. All are triazoles, ecocantins and amphotericin B. ये सिस्टमिक एंटीफंगल है. सिस्टमिक एंटीफंगल में जो इंजेक्टेबल जो इंट्रावेनसली हम लोग देते हैं, ये चार ऑप्शंस जो विच इज़ गिवन हियर लाइक फ्लूकोनाजोल, एम्पोटेरिसिन, मिकोनाजोल एंड केटोकोनाजोल. ओनली एम्पोटेरिसिन कैन बी गिवन इंट्रावेनसली. So this question. Now again I want to discuss one more question in paper 1. Like they have asked in one of the year, just a minute. Yeah, ये बहुत important questions है. The most common complication of CSOM, chronic suppurative otitis media. What is the most common complication? सो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि CSOM होता क्या है. व्हाट इज CSOM? यू हैव टू नो. सो द मोस्ट कॉमन इंट्राक्रैनियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ इट इज़ एन ऑप्शन आर गिवन. फर्स्ट मैं ऑप्शन का डिस्कस करूँगा. ऑप्शंस है A मेनिंजाइटिस, B इंट्रासेरेब्रल एब्सेस, C कोलेस्ट्रोमा एंड D कंडक्टिव डेफनेस. सो इसमें जो CSOM जो है, CSOM का सबसे जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो इंट्रासेरेब्रल एब्सेस है. और द मोस्ट कॉमन इंट्राक्रैनियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ ईयर डिजीज दैट इज जैसे ब्रेन एब्सेस. एज पर आप अगर SK दे जो हमारा ENT का टेक्स्ट बुक है वो बहुत बेसिक बुक माना जाता है अबाउट जो एज पर SK दे भी मेनिंजाइटिस को उन्होंने ये माना है मोस्ट कॉमन इंट्राक्रैनियल कॉम्प्लिकेशन. लेकिन फिर भी इंट्रासेरेब्रल एब्सेस इज द नोन टू बी द कॉमनेस्ट. So cerebral abscess nearly always result from ear disease and CSOM is the most common cause of brain abscess and 25% of brain abscess result from the ear disease. So 25% of जो brain abscess है it results from the ear disease. So अगर इसमें जैसे there is a confusion but still the commonest part, the common cause of the CSOM complication is intracerebral abscess. So this is one of the very important and controversial question also because in the some of the ENT textbook they have given like SK as I told, they have given as meningitis, but still apart from that if you see in Harrison and if you see in other textbook of medicine or in infectious disease they have given intracerebral abscess as an option. So we will go in the intracerebral abscess as the correct option, as the our options, and that is the correct option. Now which one of the following is not an intravesical chemotherapeutic agent? That is also one of the question asked in paper 1 in one of the years. So the option is mitomycin C, BCG, epirubicin and thiotepa. Now first of all we have to know that intravesical जो which is not an intravesical chemotherapeutic agent, mitomycin C, BCG, epirubicin and thiotepa. Apart from all these four options, only BCG is not given intravesically because BCG actually we give in prostate, prostate cancer we give, and mitomycin C, epirubicin and thiotepa is also given in many malignancy like in prostate also, in other malignancies also. So now you have to know about the various TNM stages also. TNM stage also, pathological TNM stages like TA, if it is in the TA, like if we were discussing about prostate, then the TA is mucosa only, multiple or low medium
tumor that can be treated either the resection alone or resection following by the 6 weeks course of the intravesical chemotherapy with mitomycin C, adriamycin, epirubicin, or thiotepa. Okay, then if we come to the pathological T1, which is the invasion of lamina propria, so endoscopic resection followed by resection for solitary medium grade for 8 weeks, followed by intravesical chemotherapy with intravesical immunotherapy like BCG and treatment of choice for carcinoma in situ. So these are all our TNM stages. कौन सा TNM stage में कौन सा treatment है, it is actually an explanation given. इतना explanation इसमें generally इतना detail में generally the question is not asked, but actually this type of question is आपकी intravesical chemotherapy agent इसमें से क्या है. तो intravesical chemotherapy agent जो है BCG नहीं है, बाकी mitomycin C, epirubicin and thiotepa all are intravesical chemotherapeutic agent, and basically all are used in the CA prostate. Now coming to going in paper 1 only. Now, which one of the following investigation is the most sensitive for early diagnosis of diabetic nephropathy? Now, diabetic nephropathy में sensitive investigation जो है, which is more sensitive, it is what? Now, the options are serum creatinine level, creatinine clearance, GTT, and microalbuminuria. So, apart from all the options given, the microalbuminuria is the most sensitive and most accurate to detect diabetic nephropathy. Now, first stage of diabetic nephropathy is hypertension, hyperfiltration with an increase in GFR, followed by the development of microalbuminuria, which is 30 to 150 microgram or 30 to 300 mg per day. It is as per the Harrison, and it is correct also, because serum creatinine, creatinine clearance, GTT, all can be not so sensitive for diabetic nephropathy because it can be increased in any other pathologies also. So microalbuminuria is one of the most sensitive, and it is one of the most decorated test which is being employed for the diagnosis of diabetic nephropathy. Now I am coming to some question of paper 2 now. Now paper 2 I am coming, and in paper 2 there is a question which came in the some year, like they have asked like bluish suburethral nodule. Bluish, now listen carefully, bluish suburethral nodule seen in the lower 1/3 of vagina is suggestive of what? Is it choriocarcinoma, it is carcinoma vagina, carcinoma cervix, or CA vulva? So bluish suburethral nodule seen in the lower 1/3 of the vagina is suggestive of choriocarcinoma, CA vagina, CA cervix, CA vulva. Now the correct option is choriocarcinoma, because in the case of the choriocarcinoma, which is the GTD, gestational trophoblastic tumor disease, the majority of primary growth arise in the body of the uterus and develop first within the endometrial cavity. Choriocarcinoma always infiltrate the wall of the uterus. This is a very important point. And metastasis early disseminated usually occurs by the way of the bloodstream. Metastasis is decided early in those found in the lower third of vagina and vulva. Such metastasis form purple hemorrhagic projection either into the vagina or around the vaginal orifice. So their appearance is characteristic and pathognomic. On examination, a vaginal metastasis appears as bluish red vascular tumor which bleeds easily on touch. So choriocarcinoma is such a bluish suburethral nodule which is seen in the lower 1/3 of the vagina. This is a very easy. Just you have to understand the concept that where it is seen and where this type of because in the CA vagina you can't see this type of nodule, bluish urethral nodule. You can't see. Neither you can see in the cervix tumor, neither you can see in the vulva tumor. Now again I am discussing this is in the paper 2. Now one more question I am discussing here. Now, like for example, they have asked question on the tumor marker, like CA125 increased in the following condition except endometriosis, dysgerminoma ovary, endometrioid carcinoma ovary, colorectal malignancy. Now, CA125 is a very useful marker for diagnosis of any vaginal,
malignancy. But apart from malignancy, in many other types of infections or in the genital region, the CA125 is elevated. But like endometriosis or dysgerminoma or endometrial carcinoma, in all these cases, the CA125 is elevated, except in the case of colorectal malignancy, because in the colorectal malignancy, CA125 is not elevated. In colorectal malignancy, generally CA19/9 or CA24/27, etc. are elevated, or CEA is elevated. So here is a very easy question that CA125 is elevated in which type of malignancy. This type of question has been given. It is in the paper 2 only, as I told you. Now, again I am discussing some of the question. Now I am coming to now, this is a very good question. Now, which one of the following, just listen the question very carefully, which one of the following is the denominator? They have asked, they have given the formula, they have asked about the formula, but not formula specifically, they have asked the denominator of that. So which one of the following is the denominator for calculating the proportional mortality rate from a specific disease? So now, proportional mortality rate of a specific disease, the formula you have to remember, and the options they have given is median population during that year. In option B, population risk in that particular area. Is C, total death in that year, and D is the attributable death of the particular disease. So the answer will be total death from all causes in that year. So this is the proportional mortality rate of a specific disease. The formula which is number of death from a specific disease by total death in that year, and the multiplier is 100. So these are the some of the questions which I have discussed generally in paper 1 and paper 2. This type of questions generally come, and as you can see that the questions are very not very hard, and neither they are easy too, because they are very conceptual questions. If you read a little and if you follow the guidebook as Dr. Rajiv has been explained very clearly, no extra guidance is required, but little bit of discussion, and if you remain active in my channel, and if you regularly go through to my channel, it is very easy to crack the UPSC CMS level. Now on my next video, I will give more. I will discuss more questions on paper 1 and paper 2, and we will discuss more questions on PSM, try to solve numericals, some of the numericals, and more questions on in paper 1 also, like in hematology or endocrinology, etc., in a more detailed way. So this will be my giving you question and explanation strategy. Now, if you want any query, if you want any question, any query, if you want to ask me, I have a Telegram group. Already I told I have a Telegram channel where you can post the question, and I will give you, I will explain you with the answer. And so I will again come, and if you if you like this channel, you subscribe to this channel and see and take the advantage of my YouTube channel. And after 2 or 3 days, I will be again coming live to give you some more question and explanation of question from the UPSC CMS. Thanks a lot.